बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 8 से जो एलपी का सिलेबस है शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो जो ये हम निशान लगाने जा रहे हैं, ये आईटी सीरीज़ की बुक से निशान लगा रहे हैं। और इसमें क्योंकि हमने 1 से लेकर 7 तक पहले बना लिया था स्मार्ट सिलेबस, अब ये हम 8 से लेकर जो 13 तक हैं वो हम लगाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पहला एक सवाल है। नेक्स्ट जो अगले सफ़े पर है वो है जी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद है हाउ वुड यू create, edit, compile, link and execute a C program. Discuss briefly. Next question है, what necessary steps taken to prepare a C program for execution. Explain the diagram. Next question है, briefly describe the basic structure of a C program. Next question है, what is preprocessor directive. Explain its purpose. Next है जी, discuss different types of preprocessor directive. Next है जी, explain header files and their use in program. Next है जी, explain main functions of used in C program. Next है जी, what do you know about C statement. Next है जी, what is define bugs and debugs. Next बहुत important question है, while writing a C program how many types of errors can occur. Discuss briefly which one is the most difficult to locate and remove. Justify your answer. तरीके से ये अब शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोग्राम. व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हु डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम. नेक्स्ट है जी, डिफाइन लो लेवल लैंग्वेज. व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. और डिस्कस डिस्टिंग्विश बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ये शॉर्ट क्वेश्चन है। Next is, what is the process of linking of C program. Next is, what is the purpose of linker in C program. Next is, what is an executable file. Next is, what is the shortcut key to compile C program. Write the shortcut key to run C program. What are preprocessor directive. Give an example of preprocessor directive. What is the purpose of sign, hash sign. What is the purpose of these statements include studio.h in C program. How is header file include in C program. How are preprocessor directive include in C program. What is the purpose of the statement include studio.h. Write the purpose of the statements include. C. What will happen if studio.h is missing in C. Name 2 types of preprocessor directive. What is the same
53 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंक्लूड प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव. 54 व्हाट इज़ यूज़ ऑफ डिफाइन प्रीप्रोसेस. 56 what are header files. 58 है what is main function of used in C program. 59 है what do you know about C statement. Next है जी what is syntax error, give example. What is logical error, give an example. What is runtime error, why logical error in the most difficult error. Last है जी differentiate between syntax error and logical error. Multiple choice question में 6 है C was designed to write program. 7 है C is और 9 है turbo C++ can compile. Which of the following keys is used in say file. The .exe file is produced by. ये टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं. जो टेक्स्ट बुक में हैं MCQs भी वाले हैं. 27 है प्रीप्रोसेस द डायरेक्टिव ऑफ कमांड फॉर द expression in defined directive. Also 44 है which of the following language required no translator to execute the file. तरीके से ये MCQs ख़त्म. और fill in the blanks जो है 1 2 3 और उसके बाद 4 नहीं है. 5 6 से बाद 13 है. तरीके से पहला 8th चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 9 है व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी. नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज. उसके बाद व्हाट इज़ वेरिएबल एक्सप्लेन्स पर्पस. नेक्स्ट व्हाट इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला है. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया. राइट डाउन द रूल्स नेमिंग वेरिएबल सी with example. What is constant, explain different types constants. Next what is the data types, these different categories of in C language. Next what is integer data type, discuss different types of stores and data. Next what is floating point data, describe different data types storing in floating point data. What are operators, list different types of operator in C. Next what is the arithmetic operator, discuss different arithmetic operator C, also describe arithmetic expression. Next briefly explain the working of deviant operators, what is meant by data types and expression, give some example. Assignment statements हो गया. Discuss compound assignment operators. Describe increment operator, describe decrement operator. उसके बाद different relational operators, how many relational operators are provided in C language, also describe the expression. What are logical operators, discuss different logical operators in C language. Next explain operator precedence with example. तरीके से चैप्टर 9 जो है ना खत्म हो गया. उसके बाद चैप्टर 9 के MCQ जो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं. वेरिएबल और डिक्लेयर्ड दूसरा हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग 4th नंबर पे वैलिड कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंट्स. 5th विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस. ये कुछ मिले हैं, दोनों का निशान लगा लिए हमने. 99 है when the results of computation of 2 every small numbers is too small to be presented is called. और fill in the blanks not complete है. 10th chapter input output वाला. इसमें क्वेश्चन है what is format specifier, discuss different format specifier in C language वाला है.
उसके बाद है जी एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फील्ड वर्ड स्पेसिफाइड फॉर इंटीजर इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन सी लैंग्वेज। ये इसमें शामिल तमाम वो जो होमवर्क और क्लास वर्क होते हैं वो भी शामिल हैं इसमें। और व्हाट आर द एस्केप सीक्वेंस, डिस्कस डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस सी लैंग्वेज। और उसके बाद है पेज नंबर 259 पे डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्कैनर फंक्शंस विद एग्जांपल। उसके बाद कैरेक्टर इनपुट, what are the character inputs, which functions are used for character input। उसके बाद explain getty function हो गया, getty function। उसके बाद और उसके बाद ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक वाली में क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, शो आउटपुट डिस्प्ले द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इंटर्ड इन 10 एंड 15 वगैरह वाला। उसके बाद 8 क्वेश्चन का ए जूस भी है, बी जूस भी है, सी जूस भी है। और 10th सवाल हो गया ये भी। उसके बाद 11 क्वेश्चन भी है, 12 क्वेश्चन भी है। MCQ जो है वो 10वें चैप्टर का द फंक्शन गैची इज़ डिफाइंड इन, ये वाला मिला है। उसके बाद 26वां मिला द एस्केप सीक्वेंस फॉर बैकस्लैशेस, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। इस तरीके से व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट्स, statement with the alternative explain its working। उसके बाद प्रोग्राम 11.3 है what is the limitation of C, simple if statements। उसके बाद है explain if statements और if else or two alternatives वाला क्वेश्चन है। प्रोग्राम 11.6 हो गया। उसके बाद what is the multiple if else if statements हो गया। 11.9 है प्रोग्राम। उसके बाद व्हाट इज़ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वर्किंग, 11.15 हो गया प्रोग्राम। उसके बाद 11.17। उसके बाद व्हाट इज़ स्विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वर्किंग विद एग्जांपल। What is conditional operator explained with example, 11.24 है प्रोग्राम। जो टेक्स्ट बुक वाले सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 2, 3 यूज़ और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 की फिल इन द ब्लैंक्स से कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 12 व्हाट इज़ व्हाइल लूप एक्सप्लेन्स वर्किंग विद एग्जांपल। प्रोग्राम 12.1 हो गया। What is the for loop explains working with example। What is sentinel control loop, how is implemented, discuss some situation which can be used। Next is what is nested loop explained with example। प्रोग्राम है 12.40
41 टेक्स्ट बुक वाले सॉल्यूशन हैं, एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए जूस बी जूस, क्वेश्चन नंबर 6 बी जूस उसका 6 का, और 7 कंप्लीट है ए और बी जूस, सी जूस और उसका बी जूस 7 का ए, उसके बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 11, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हैं 12 चैप्टर के, और ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट। चैप्टर नंबर 13 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी। Briefly describe the process of writing program C language. What are the function declaration, function prototype, function signature? Explain with the example. What is function definition? What is function call? What is local variable? Explain its scope and lifetime. What is global variable? Explain its scope and lifetime. ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 करना है। और MCQs में चैप्टर नंबर 13 के 4th फंक्शन प्रोटोटाइप वाला ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी इज एलोकेटेड, और उसके बाद है द नेम ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मेट पैरामीटर फॉर्मल आर्गुमेंट आर कॉल्ड, द प्रिंटफ इज बिल्ट इन फंक्शंस वाला, और उसके बाद इन ए प्रोग्राम 2 फंक्शन एज कैन, और फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट और ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट। इस तरीके से आज का जो सिलेबस CLP सेकंड पार्ट जो सेकंड ईयर का है वो कंप्लीट हुआ जाता है। खुदा हाफिज़।